refraction through a spherical surface. This is concave shape. Suppose that this is the surface. This is a denser medium and here is the rarer medium. This is the principal axis. You can see that the center of this surface, because this is a sphere, center of this surface will be lying somewhere here, C. You may assume that any object O is here. The one light will be propagating along the normal, going straight. Second light ray will be incidenting somewhere here. Now draw a normal from the center to the incidence point. Sorry. बड़ी गड़बड़ हो रही है. This is the normal. Good morning, sir. Good morning, beta. This will be taken as angle of incidence I. Because the light is traveling from 1 to 2, so it will be deviating towards the normal. And you can see, since after refraction, light rays are going away from the principal axis, hence it will form a virtual image. So if you extend this ray, it will be intersecting the principal axis at the point I. Clear? So here this angle is taken as R. I is the angle of incidence, R is the angle of refraction. CA is the normal. Here I am mentioning CA is normal. Angle OAC is I, angle of incidence. Angle IAC. You can see this angle is R, so vertically opposite this angle is also R. This is R, angle of refraction. ठीक, हमने एज्यूम किया ऑब्जेक्ट का एंगल प्रिंसिपल एक्सिस पर अल्फा, इमेज का बीटा और सेंटर ऑफ कर्वेचर का गामा सस्टेन करता है. मैंने यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ये पॉइंट P, दिस पॉइंट P डैश, OP डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट. तो सर दिस इज माइनस U. क्लियर? IP distance of image. This is minus V. PC this radius of curvature.
this is minus r. Okay, now using Snell's law for small curvature या small aperture, तो n1i equal to n2r. But you can see that this I plus alpha, it is equal to gamma. तो n1 मैं I का वैल्यू लिख रहा हूं यहां पे बच्चों, गामा माइनस अल्फा इक्वल टू n2. You can see gamma equal to r plus beta as well also. तो r equal to gamma minus beta. Am I clear? Okay. This is n1. गामा को अगर मैं कैलकुलेट करूंगा, दिस इज AP अपॉन PC डैश, AP अपॉन PC डैश, P डैश C. अल्फा को कैलकुलेट करता हूं, दिस इज AP डैश, सॉरी AP डैश अपॉन OP डैश इक्वल टू n2. गामा इज अगेन द सेम, AP डैश अपॉन P डैश C या PC डैश minus beta, this is AP dash upon P dash I. You can see AP dash is common from here, cancel. Since P dash is very close to P, so P dash C will be taken as PC, OP dash will be taken as PO, and P dash I will be taken as PI. And the values are these. So your result will be N2, and you can see what is written here, PC dash. So PC dash is equal to PC, this is minus R, minus N2 upon, you can see OP dash is minus U. तो माइनस माइनस प्लस यू इक्वल टू n1 में अपॉन PC डैश, दिस इज माइनस आर. फिर से देखें, PI डैश, ये PI हो जाएगा, तो n1 अपॉन V माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. शफल कर लीजिए टर्म्स को, तो n1 ये n2 है बच्चों, ये n1 है, गलती से लिख दिया. दिस इज, आई एम राइटिंग इट अगेन. दिस इज n1 अपॉन PC डैश. सो दिस इज n1 अपॉन माइनस r माइनस n1 अपॉन माइनस माइनस प्लस u इक्वल टू n2 माइनस r माइनस माइनस प्लस n2 अपॉन v. एक काम कीजिए, r को एक साइड में कर दीजिए, तो n2 अपॉन r माइनस n1 अपॉन r, इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए RHS में, n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन v. योर फाइनल रिजल्ट विल बी n2 माइनस n1 अपॉन r इक्वल टू n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन v. If surface is flat or plane, then r will be infinity. So n2 minus n1 upon infinity equal to n2 upon v minus n1 upon u. सर ये जीरो हो जाएगा, तो आपके पास में रहेगा n2 upon v माइनस n1 अपॉन u, इट इज इक्वल टू जीरो. तो n2 अपॉन v इक्वल टू n1 अपॉन u. ठीक है, आप इसको क्या लिख सकते हो, v इक्वल टू n2 अपॉन n1 इंटू u. कहिए जी, ठीक है, लिख सकता हूं मैं ऐसे? Yes, sir. इतनी बात क्लियर सबको? Yes, sir. Yes, sir. Now you see lens.
लेंस का मतलब होता है अ ट्रांसपेरेंट मीडियम which is bound between at least one curved surface. यानी कि लेंस में एक सरफेस का कर्व होना मस्ट है। अगर दोनों सरफेस प्लेन होंगी तो ये प्लेन रिफ्रैक्शन होगा। आप अगर कहते हो कि कर्व सरफेस, तो इस बात का मतलब मान लीजिए कि ये सरफेस कुछ ऐसी होगी, ये लेंस बन जाएगा। अगर ऐसे नहीं बनेगा लेंस, देन इट मे बी इन द शेप ऑफ दिस आल्सो। At least one curved surface is required. Clear? So there are the two types of the lenses. Of spherical lenses. Number one, convex lens. ये जो convex lens होता है ना, it is thick in mid and thin at edges. यानी कि देखने में कुछ ऐसा होगा ये लेंस। ये मिडिल पार्ट है, ये थिकस्ट है, ये थिन पार्ट है एज पर। अब सरफेस में देयर आर द टू कर्व्स, तो टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। नंबर ए, डबल कॉन्वेक्स लेंस। तो डबल कॉन्वेक्स लेंस, तो मान लीजिए आपके पास में दो स्फीयर थे, वन, और ये जो है ना उनकी इंटरसेक्शन है। तो अगर मैं इस पार्ट को देखूं तो ये पार्ट मेरा लेंस बनकर आता है, दिस पार्ट। और लाइट कहीं से भी क्यों ना आए, जिस सरफेस पे पहले इंसिडेंट होगी ना, वो सरफेस फर्स्ट कंसीडर होगी। अगर मैं मान के चलूं कि लाइट आ रही है लेफ्ट टू राइट, तो सिर्फ फर्स्ट कर्व ये है। अगर ये फर्स्ट कर्व है तो इसकी रेडियस को मैं, ये पोल हो जाएगा या ऑप्टिकल सेंटर, दिस पी इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। ये लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है। इट मे लाई इनसाइड और आउटसाइड, बात करेंगे इस पर। लेकिन ये मिडिल पार्ट है, तो अगर मैं यहां से रेडियस मेजर करूंगा, अब लाइट ये आ रही है तो फर्स्ट सरफेस ये हुई, दिस इज द फर्स्ट सरफेस। अगर मैं इसके ऊपर देखूं, लाइट ये आई और इसकी रेडियस को मैं मेजर करने जा रहा हूं, तो लाइट के प्रोपोगेशन के सेम डायरेक्शन में जाऊंगा, देन द C1 विल बी हियर, देन R1 will be positive. But you can see when I go to measure the second surface, अब जब सेकंड सरफेस आ गई, इसके रिस्पेक्ट में मैं इसकी रेडियस मेजर करने R2 अपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट में जाऊंगा, तो R2 will be taken as negative. सर ये साइन कन्वेंशंस यू हैव टू बियर इन माइंड. This is your double convex lens, and the double convex lens can be taken as convexo convex. The meaning of this is a convex, यानी कि first refraction is at the convex and the second is also at the convex. इस बात का मतलब एक convex lens वो हो जिसका second surface भी convex हो, that is known as convexo convex. Clear? Then you see number 2, plano convex lens. Anyone is having any doubt?
Suppose that this is the sphere and a slice is taken from here. अब ऑप्टिकल सेंटर यहां कहीं आ गया. If the light is incidenting in this direction, left to right, तो फर्स्ट सरफेस कर्व ये कॉन्वेक्स है. तो प्राइमरी रिफ्लेक्शन इज थ्रू द कॉन्वेक्स and the secondary refraction is through the plano. So a convex whose second surface is plane, that's why this is plano-convex. In this condition, R1 will be positive because it will be radius will be measured in the same direction of the light, and R2 will be in this condition infinity. Am I clear? Am I clear? Am I clear? Yes, sir. Number 3. Yes. Yes, sir. Convex. A convex यानी कि primary is convex but the second is concave. So suppose you are having the one surface and this is the second surface. You can see. अब light अगर propagate करेगी, if this is the light incidence of the light, in this situation C1 and the C2 both will be in the same direction of the light will be measured. So here R1 is positive as well R2 is positive. Clear? These are the convex lenses and Yes, sir. Hanji, saying something? No, sir. This is concave lens. Now, a concave lens thin in mid and thick at edges. ये जो लेंस है ये कुछ ऐसा होता है. This is a thin part. This is thick. अब बनाएंगे कैसे? तो नंबर 1 is this is B, this is C. Huh? A is a double concave. And suppose the material is filled in between this space of these. अब आप एक काम कर सकते हो, इधर से इस सरफेस को रिमूव कर सकते हो, इधर से इस सरफेस को रिमूव कर सकते हो. कंप्लीट सरफेस दिखाना चाहें तो दिखा सकते. अब सपोज करो कि लाइट का इंसिडेंस हुआ, तो लाइट सपोज फ्रॉम हेयर टू हेयर, तो ये जो है ये प्राइमरी सरफेस, ये फर्स्ट सरफेस हो गई. सेकंड रिफ्लेक्शन विल बी हेयर. अब फर्स्ट सरफेस के लिए आप मेजर करने जाओगे इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द लाइट. सॉरी, फर्स्ट सरफेस की रेडियस मेजर करने जाओगे आप इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द लाइट. सो R1 विल बी नेगेटिव हियर और R2 जो है C2, R2 will be positive in this condition. Always remember. This is double concave. और इसका दूसरा नाम रख सकते हो कॉन्केवो concave. Then after you see plano concave. A concave whose second surface is plane. If this is the incidence of the light, then the C1 is somewhere here. So R1 will be taken as R1 is measured from here to here in this direction. So this is negative and R2 will be taken as infinity. Number 3 is convexo concave. ध्यान रखिएगा कैरेक्टरिस्टिक वही रहेंगे, बीच में थिन, एजेस पर थिक. तो ये बड़ा ही अजीब तरह का लेंस है, ये कुछ ऐसा होता है. You can see
थिन इन द मिड, थिक एट द एज। आप इसमें और इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, यहां पर थिन एट द एज, थिक एट द मिड। यू कैन सी दैट्स व्हाई दिस इज कॉन्वेक्स। बीच में मोटा है तो कॉन्वेक्स है, अगर किनारों पर थिक है तो कॉन्केव। एंड यू कैन सी द रेडियस ऑफ द बोथ सरफेस, द सेंटर C1 as well the C2, both are in the opposite direction of the propagation of light, so R1 and R2 both will be negative. तो ये जो थे ये लेंसेज के साइन कन्वेंशन हम लेकर चले। क्लियर? नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी आर ऑब्टेनिंग लेंस मेकर फॉर्मूला। हमने माना कि लेट देयर इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट O placed at distance U from a convex lens of focal length F, ठीक। the radii of curvature of both the surface S1 and S2 are R1 and R2। तो समान लीजिए कि दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज द सरफेस S1, दिस इज द सरफेस S2, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। somewhere here the object is placed O, एक लाइट रे ये जाएगी एंड द सेकंड लाइट रे विल बी इंसिडेंटिंग समवेयर हियर। आप देख सकते हो ये फर्स्ट सरफेस है, इसका सेंटर C1 समवेयर हियर। अगर मैं इस जगह पे नॉर्मल ड्रॉ करता हूं तो लाइट रे 1 से 2 में जा रही है, इट विल बी डेविएटिंग टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। ये प्रिंसिपल एक्सिस की ओर डेविएट होगी एंड देन इट विल बी फॉर्मिंग द इमेजेस समवेयर एट I1। दिस इज द डिस्टेंस माइनस U, दिस इज द डिस्टेंस V1। तो हमने लिखा फॉर द रिफ्रैक्शन थ्रू सरफेस S1। आप चाहें तो दोबारा से डायग्राम देख लीजिएगा। दिस इज द कर्व सरफेस, हियर इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट O, दिस इज द सेंटर C1, इंसिडेंस नॉर्मल, दिस इज द रिफ्रैक्शन एंड द फर्स्ट इमेज इज फॉर्मिंग हियर, ठीक है। ड्यू टू रिफ्रैक्शन light rays forms image at distance V1 at point I। ये V1 है, ये I1 पॉइंट पर डिस्टेंस में, यूजिंग N2 upon V1 minus N1 upon U equal to N2 minus N1 upon R। ये देखो डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर रहे हो, इसलिए दोबारा से साइन कन्वेंशन यूज नहीं किया है। आप चाहें तो इस सरफेस के रिफ्लेक्शन को पूरी तरह से ऑब्टेन कर लीजिएगा, लेकिन जरूरत नहीं है, ठीक है। ये एंगल I दिखा सकते हैं आप, एंड यू कैन शो दैट दिस एंगल इज R। This is the refraction from the first surface, and you can see this is the somehow the similar thing which you have drawn here. Now the light ray will be now
light rays will incident on surface S2. तो surface S2 is this. इन्हीं दोनों को कंबाइन करोगे कॉन्वेक्स लेंस पूरा हो जाएगा. दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस. हम मान के चल रहे थे कि लाइट रे ये जा रही है, और उसका इमेज I1 यहां कहीं बना. इस सरफेस का सेंटर C2 विल बी समवेयर हियर. जब आप इस पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे, because the light is passing from denser to rarer, it will be deviating away from the normal, so the image I will be forming somewhere here. मैं इस डायग्राम में अगर आपको दिखाऊं तो मैंने दूसरा नॉर्मल बनाया. आपकी से मैंने C2 का नॉर्मल ग्रीन कलर से लिया है और इस पॉइंट पे ड्रॉ करूंगा बच्चों. आप देख सकते हो दिस इज डेंसर, दिस इज रेयरर. तो लाइट रे डेविएट होगी अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, और मान लीजिए कि ये डेविएट होकर कहां आ गई, सॉरी, ये डेविएट होकर बच्चों यहां कहीं आ गई एट द डिस्टेंस v. तो आप एग्जाम में क्या करोगे ना, ये सारे डायग्राम बनाकर दोगे. ठीक है, फर्स्ट डायग्राम ये होगा, इसका नाम सरफेस S1, इसका नाम सरफेस S2, एंड देन यू विल बी शोइंग द रिफ्रैक्शन थ्रू द बोथ द सरफेसेस. कि फर्स्ट सरफेस पे ऐसा हुआ, एंड देन आफ्टर ऑन द सेकंड सरफेस दिस इज द डिस्टेंस v1, दिस इज v. तो नाउ द रेज विल एंड image I1 will behave like object, and finally image forms at I. अब लाइट ट्रेवल कर रही है डेंसर टू रेयरर, सो n1 अपॉन v माइनस n2 अपॉन u के बदले v1 इक्वल टू n1 माइनस n2 अपॉन r. This is your equation number 2. Now you can see this is 1, this is 2. Add these two equation, क्योंकि both the surface combine हो जाएंगे तो लेंस बन जाएगा. Equation 1 plus equation 2, n2 upon v1 minus n1 upon u equal to n2 minus n1 upon r1. Second equation थी बच्चों n1 upon v minus n2 upon v1 इक्वल टू n1 माइनस n2 अपॉन r. मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया तो सर ये कैंसिल हो जाएगा. n1 मैंने यहां पर देखा तो मुझे मिलेगा 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r1, एंड फ्रॉम हियर आई टुक माइनस साइन कॉमन, n2 माइनस n1 अपॉन r2. एम आई क्लियर? चेक कर लीजिए. तो 1 upon v minus 1 upon u, n2 minus n1 is taken as common, and the n1 is sent here in the denominator. This is 1 upon r1 minus 1 upon r2. This can be taken as 1 upon v minus 1 upon u, n2 upon n1 minus n1 upon n1 equal to 1 upon r1 minus 1 upon r2. You can see this is 1 upon v minus 1 upon u equal to n2 upon n1 minus 1 upon r1 minus 1 upon r2. This is 1 upon v minus 1 upon u, sorry, it is equal to 1 and 2 minus 1 upon r1 minus 1 upon r. Either do you go for this equation. Here we suppose if u is at f, then v will be at infinity. So 1 upon f minus 1 upon infinity
This is the formula for the focal length. This is less maker formula. And this is you treat it for the convex lens. ठीक है, ये convex lens के लिए है. Is this clear? 1 upon f equal to n minus 1, 1 upon r1 minus 1 upon r2. ये n जो है डिपेंडेंसी ऑफ फोकल लेंथ. नंबर 1 वेवलेंथ. तो हम कहते हैं लेट ऑब्जेक्ट इज इल्यूमिनेटेड विद red light first and then it is replaced with blue light. तो जरा गौर से देखिए, फोकल लेंथ इनवर्स ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, NV ग्रेटर देन NR. सो FV लेसर देन FR होगा. यानी कि अगर मैं मानकर चलूं कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऑब्जेक्ट रखिए, सॉरी, an object is placed at the principal axis and this is illuminated with the blue light. इसकी इमेज यहां कहीं बनी, IV. ये डिस्टेंस U है, ये डिस्टेंस VV हो जाएगी, द इमेज डिस्टेंस फॉर द वायलेट कलर. नाउ सपोज द सेम लेंस, दिस इज द ऑब्जेक्ट O. ये वही ऑब्जेक्ट है, बट इट इज नाउ इल्यूमिनेटेड विद द रेड लाइट. ये डिस्टेंस U ही है, लाइट रेज ये जाएंगी, आपकी से जो कन्वर्जेंस होगा वो यहां कहीं IR. गॉट इट? तो इमेज क्या होंगी, ज्यादा दूर बनेंगी. तो फोकल लेंथ डिपेंड कर रही है किस पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर. एंड इनवर्सली, तो अगर मुझे कहा जाए ये ग्राफ बनाइए, एक्स एक्सिस पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वाई एक्सिस पर फोकल लेंथ, तो जैसे जैसे ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा. Am I clear in my words? Am I clear? क्यों जी? Yes, sir. Yes, sir. तो अभी लेसर देना मिनट है, तो इसलिए मैं मीटिंग को यहीं ओवर करता हूं. आज के लिए मैं आपको यहीं पे रोक देता हूं, ठीक है? रेस्ट वी डिस्कस टुमारो मॉर्निंग. क्लियर? कल क्लास नहीं है ना? No, sir. ओके, तो चलो बाकी सैटरडे को डिस्कस करेंगे. कल टेस्ट होगा, ठीक है? और कल टेस्ट में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लिखकर भेज दूंगा, वो आप मुझे लिखकर भेजेंगे, आंसर उनके PDF खींच के भेजेंगे, ठीक है? ओके. और टेस्ट का टॉपिक ये Yes, जो sir. अभी तक रे ऑप्टिक्स के जितने डेरिवेशंस हैं, इनमें से कोई भी एनी 2 or 3 डेरिवेशंस आई में आ सकती. क्लियर? Yes, sir. Okay, sir. बाय बाय.